Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Varun. Let's start in 2 minutes. तब तक के लिए सब लोग make sure that you guys keep your charts clean. Good morning, Naveen. नवीन कैप्स मत यूज करना चाहता. Yes. So let's start with gold. Let's start with the daily time frame. What do you notice in gold in today's scenario? मार्केट एक क्लियर कट बुलिश पैटर्न में है. बट आज का दिन मार्केट क्या कर रही है? मार्केट एग्जैक्टली जो विक चाहिए था वो विक क्रिएट करके अभी ऊपर आके सस्टेन हुई. राइट. टू थिंग्स यू गाइस हैव टू नोटिस. व्हाट? This is your line of conduct as number one. This is your line of conduct number two. क्या will the market sustain all and above on top of this? Good morning, Raju. Right? You have to look for that circumstances. सर हिंदी में बताए. सर मिक्स कॉम्बिनेशन है, दोनों मिला के बोलूंगा. ठीक है नवीन. सो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, क्या किया है मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है. करेक्ट. सो बुलिश ट्रेंड में पुल बैक के साथ मार्केट रैली कंटिन्यूटी की थी. राइट. यहाँ पे जाके एक, दो, तीन, चार. व्हाट इज मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे? मार्केट इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, बिकॉज ये हमारा गैपिज्म लेवल था. गैपिज्म कंप्लीट हुई थी, शैडो बिल्ड हुआ था, लिक्विडिटी अलोकेट इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हुई थी. उस पॉइंट ऑफ एक्शन से अभी मार्केट एक पीओआई बना रहा है. पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो अभी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में
हमें मेजरली क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें मेजरली डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो अभी करेंट सिनेरियो में सुबह होने के बाद मार्केट हमको बुलिश मूवमेंट का इंडिकेशन दी है बिकॉज ऑफ द विक क्रिएशन। पोस्ट द विक क्रिएशन, व्हाट इज द वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक? हमारा वेव बुलिश है, तो हम टाइड 2 को आएंगे विच इज 4 आवर्स। अभी 4 आवर्स में हम क्या नोटिस कर रहे हैं? मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ एक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, करेक्ट? सो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अलोकेट हो रहा था। ट्रेडिंग वॉल्यूम जब अलोकेट होता है तब क्या करता है? अगर मार्केट में 1000 लोग शॉर्ट की तरफ बैठे विथ ए ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 1, राइट, एंड अगर लॉन्ग के तरफ विद ए ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 2, मार्केट किस तरफ की डायरेक्शन में मूव होगा? मार्केट विल मूव जिस तरफ का ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? इन दिस सिनेरियो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा किस तरफ का है? बुलिश साइड का। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू वर्क फॉर? किस चीज के ऊपर हमें काम करना है? वी हैव टू वर्क फॉर अ मूवमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। हमेशा याद रखिए, मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मत बैठिए। कंसिडरेबली जितना अलोकेशन दिखाता है उतना ही ट्रेड को अलोकेट करके चलिए, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर मार्केट सस्टेन होती है इस जोन पे, तो हमें व्हाट इज द वन थिंग दैट वी कैन नोटिफाई? अ स्मॉल इंड्यूसमेंट बिल्डअप एंड कंटिन्यूटी। कितना कंटिन्यूटी आनी चाहिए? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई, उतना हमारा मूवमेंट यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए, राइट? दिस इज आवर 4 आवर्स एनालिसिस। 4 आवर्स एनालिसिस होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नोटिस ऑन? हमारा वेव बुलिश है, हमारा टाइड टू बुलिश है। अभी हम आते हैं टाइड 1 विच इज 1 आवर, राइट? गुड मॉर्निंग मल्ली बाबू सर। In tide 1, what is the first thing that you have to notice? The first thing you have to notice is क्या हमारा डायरेक्शन में जो सप्लाई एंड डिमांड हमें चाहिए, वो सप्लाई एंड डिमांड बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ? ओके, इन द सिनेरियो जितना हमारे को सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट होना था उतना सप्लाई एंड डिमांड हमें अलोकेट हुई है, राइट? अगर नोटिस कर रहे हो, ये हमारा फर्स्ट डिमांड मूवमेंट था। क्या ये डिमांड मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई थी? यस। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो कंटिन्यूटी में जो सप्लाई जनरेट हुआ था, उसके बाद क्या ये डिमांड हमारा कंप्लीट हुई थी? एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, यस, मार्केट ने हमारा डिमांड कंप्लीट किया। छोटा सा भाई, बट सस्टेन नहीं हुई थी, कंटिन्यूटी में मार्केट आया था, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक? वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंड्यूसमेंट्स, राइट? इंड्यूसमेंट का रेंज कहाँ पे है? इस पॉइंट ऑफ एक्शन, जो कि हमारा फ्राइडे का इवनिंग सेशन में जो मार्केट था, इंड्यूसमेंट बिल्ड किया। एवरी कैंडल हैज अ पार्टनर, रेड के लिए ग्रीन, ग्रीन के लिए रेड, right? So post this, what is the one thing that we have to look for? Next is the direction allocation. So at the current point, हमारा जो 1 आवर है, 1 आवर क्या बोल रही है? 1 आवर is still bullish. So हमारा वेव बुलिश हो गया, टाइड 2 बुलिश हो गई, टाइड 1 भी बुलिश इंडिकेशन दे चुकी है। What is the next thing?
सो 30 मिनट्स में हमारा व्हाट डू वी हैव टू नोटिस 30 मिनट्स में जो हमारा आज के दिन का जो डिमांड है, राइट, इस डिमांड कंप्लीशन होने के बाद एक रिवर्सल बिल्ड हुई थी। उस रिवर्सल के साथ एक मूवमेंट कंटिन्यूटी आई थी, राइट। इस मूवमेंट कंटिन्यूटी में अभी जाके मार्केट एक पॉइंट ऑफ एक्शन पे सस्टेन हुई है, राइट, जो कि हमारा कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई था, राइट। इस कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई में व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक, अगर यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बिल्ड होती है तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन से व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू लुक फॉर, राइट, यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ डिमांड क्रिएशन। वो डिमांड क्रिएशन कितना होगा और कब तक होगा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स कम डाउन टू 15 मिनट्स, राइट। What is it saying in 15 minutes? 15 minutes में एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक सप्लाई अलोकेट हुई है, राइट। इस सप्लाई अलोकेशन को कंप्लीट करने के लिए मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगी, राइट। कितना होना चाहिए वो रिट्रेसमेंट, डिपेंडिंग ऑन टू सर्कमस्टांसेस। क्या ये रैली कंटिन्यू करने वाली है, अगर ये रैली कंटिन्यू करेगी तो जो हमारा फर्स्ट डिमांड है, राइट, दैट विल बी द अलोकेशन ओवर हियर, वो हमारा फर्स्ट अलोकेशन होगा, राइट। अगर डिमांड कंप्लीट नहीं करेगी देन विच डिमांड वी विल बी कंसिडरिंग, आज का दिन का जो प्रीवियस फर्स्ट अलोकेशन डिमांड है, राइट। एंटायर बुलिश मूवमेंट में फर्स्ट डिमांड स्ट्रक्चर कहाँ पे बिल्ड हुआ था, ये वाला, करेक्ट। सो उतना ही डिमांड यहाँ पे देखने को मिलेगी पोस्ट व्हाट, पोस्ट अलोकेशन ऑफ दिस, ओके। गुड में कोई डाउट्स? सो अगर आपको लॉन्ग में फिर से ऐड करना है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन दैट वेयर यू विल बी लुकिंग टू ऐड इन द ट्रेड, राइट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जैसे ही हमें एक अच्छा खासा इंड्यूसमेंट दिखती है फिर से, उस इंड्यूसमेंट के साथ कंटिन्यूटी इन द अलोकेशन, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन में मत बैठना, मार्केट को इंडिकेट करने दो, लेट द इंडिकेशन हैपन, पोस्ट दैट ओनली we will be looking into the execution of the next add-on quantity. So this is gold. Gold में कोई doubts? No. Okay. So now let's come to the point of action of BTC, right? What is BTC doing today? BTC is in the price action of bearish movements in our execution point. So to complete this, हम start करेंगे daily time frame से, right? What do we notice on a daily time frame, right? Liquidity confirmation, movement created, bullish. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक मेजर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, जो यहाँ पे जो पुल बैक में सब लोग बैठे, इस कैंडल में क्या किया मार्केट ने, उन सब लोगों को एसएल लेके अभी स्विंग ट्रेडर्स का एसएल हंट करने जा रही है, right? तो इस SL hunting में what is the one thing you have to understand, our wave is currently bearish, right? If my wave is bearish, what is the next thing that I will be looking for, what will be the next thing that I will be looking for,
The next thing I will be looking for is a 4 hours allocation. 4 hours allocation में क्या बोल रहा है market? Market is saying that currently I am in a bullish trend, but here I have generated a bearish movement and I will continue the rally. मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा रैली को क्योंकि मेरा बुलिश ट्रेंड में जो वॉल्यूम चाहिए था ट्रेडिंग वॉल्यूम वो नहीं है. ओके, because there was no trading volume in the bullish side, market will take a rejection with the liquidity and continue the trade. Right? इस point of action में हमें क्या समझना है? Mainly, we have to understand किस तरफ का proper POI या inducement create करने वाली है. राइट, जिस तरफ का प्रॉपर पीओआई या इंड्यूसमेंट क्रिएट करने वाली है वो आइडेंटिफाई करेंगे हम थ्रू द फॉर्मूला ऑफ दिस. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर BTC टू आइडेंटिफाई एंड सस्टेन इन द मार्केट. राइट, सो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी बट अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद. So this is the formula which BTC works on. This is the golden ratio allocation. इसी allocation के साथ मूवमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी. सो इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम हमारा ट्रेड ऑफ अलोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे आज के दिन में कितना होगा. आज के दिन का ट्रेड ऑफ अलोकेशन में हमारा वेव बेरिश थी एंड 4 आवर्स क्या इंडिकेट कर रहा है? 4 आवर्स इज इंडिकेटिंग अ बेरिश मोमेंटम विद द इंड्यूसमेंट क्रिएशन ओवर हियर. राइट, जब इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई, व्हाट डिड इट से? इट सेड दैट जितना हमारा मूवमेंट होगा उतना ही अलोकेशन दिखेगा. राइट, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, कंटिन्यूटी आई, कंटिन्यूटी के साथ देयर वाज ए प्राइस एक्शन. राइट, बट येट द मार्केट इज फॉलिंग. मतलब यहाँ पे हर एक वॉल्यूम इज मेजरली अलोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रेड. मतलब बुलिश साइड में बहुत कम है. राइट, इट्स नॉट इवन इन द रेशियो ऑफ 1:2. राइट, सो यहाँ पे जब 1:2 का रेशियो से भी कम होता है, द डायरेक्शन विल टेंड टू टेक इन द सेम साइड ऑफ द मूवमेंट. बिकॉज जो हमारा संडे की वेबिनार था उसमें क्या बोला था? अगर बुलिश साइड वालों का एटलीस्ट 1 रेशियो भी निकलता है देन दैट विल शो ए फेक मूव एंड देन कंटिन्यूटी. ओके, नॉट प्रायर टू दैट. तो हमारा 4 आवर्स क्या कर रहा है? 4 आवर्स इज ऑल्सो स्टिल इन आर bearish direction. Okay, so when our 4 hours is in the bearish direction, what is the next thing that we have to look for? Next चीज क्या है हमें जो देखना है? 1 आवर पे आता है. 1 आवर क्या इंडिकेशन दे रही है हमें? 1 hour is indicating that market is in the bearish trend following through the extensions. Right, following through the extensions levels. This was the first target which got hit. Now, this is the moment where it's gonna take for. जिन जिन को एक्सटेंशंस नंबर दिया है उस एक्सटेंशन नंबर्स को आइडेंटिफाई करके अलोकेट करो. यू विल कम टू नो कौन सा प्राइस एक्शन कहाँ से लिया जा रहा है. राइट, व्हाट डू यू नोटिस? दिस वाज द फर्स्ट प्राइस एक्शन. टारगेट हिट हुई थी. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल लुक फॉर? यू विल लुक फॉर एक रिट्रेसमेंट पॉइंट. In this retracement point, what is the one thing? Yes, identifying the demand and supply.
एक्सक्यूज मी। सो डिमांड एंड सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डिमांड एंड सप्लाई, व्हेन द मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन, अगर एक्सटेंशन 1.6.8 एग्जीक्यूट हो चुकी है, इस एग्जीक्यूशन से आपको एक रिवर्सल अलॉकेट होगी एज पर द सप्लाई, राइट? डिमांड मूवमेंट किस तरफ का है? मूवमेंट बेरिश है। बेरिश में हमारा रिट्रेसमेंट क्या होगा? सप्लाई होगी, राइट? सो इन दिस सिनेरियो, अगर आप नोटिस कर रहे हो, व्हाट इज दैट थिंग यू आर नोटिसिंग? इट जनरेटेड अ सप्लाई क्रिएशन फ्रॉम द पॉइंट। कितना ट्रेड का सप्लाई होगा? जितना मूवमेंट, उसका दुगनी यहाँ पे कैलकुलेशन होके अलोकेट होगी। सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये हमारा दुगनी होके ये हमारा रिजेक्शन रिवर्सल पॉइंट था, राइट? अभी इस रिवर्सल पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें एक चीज नोटिस करनी होगी। व्हाट इज दैट? एनी गेसेस? यस, दैट्स राइट। सो अभी हम इस पॉइंट ऑफ एक्शन से फिर से हम एक्सटेंशन को अलोकेट करेंगे, राइट? जैसे ही हमने फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सटेंशन अलोकेट किया, व्हाट डू यू नोटिस? वेयर इज द मार्केट टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम? फ्रॉम आर सेम मेजर रिवर्सल पॉइंट, राइट? इस रिवर्सल पॉइंट के साथ फिर से एक ट्रेड ऑफ एक्शन बिल्ड आउट हुई थी टू जनरेट द प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, राइट? जितना हमारा डिमांड था उतना ही मूवमेंट अलोकेशन हुई थी। एट दिस सिनेरियो, जितना सप्लाई यहाँ पे बिल्ड हुआ उतना ही सप्लाई यहाँ पे अलोकेट होके कंटिन्यूटी में मार्केट है। सो माय 1 hour in the current scenario is still bearish, right? So 1 hour is bearish. What is the next thing that we have to look for? We have to hunt for a trade. हंट इन द सेंस, सच में हर एक जगह पे ट्रेड बैठना नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हम नोटिस करेंगे हमारा राइट जहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है। सो वी एग्जीक्यूट द ट्रेड्स एट 30 एंड 40 मिनट्स, करेक्ट? सॉरी, 30 एंड 15 मिनट्स। सो हम आएंगे 30। So in 30 minutes, what do you notice? Movement is in the direction. So the direction is in the bearish side. So is point of action में you have to look for today's movement allocations. Today's movement allocations has been identified through the extension points, right? To the extension points, what do you have to notice? Do we have an inducement in the range? क्या हमारे पास inducement है? Right? क्या हमारे पास inducement है? Yes. कौन से लेवल पे है इंड्यूसमेंट? 96,800 एंड 96,400, करेक्ट, राइट? दिस इज आवर इंड्यूसमेंट पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में वी फाउंड आवर इंड्यूसमेंट, राइट? सो व्हाट डू यू नोटिस? एवरी कैंडल हैज अ पार्टनर। पीओआई बिल्ड हुआ यहाँ पे। इस पीओआई में मार्केट मूव होना तो एक शॉट में ऊपर के लिए मूव हो सकता था, राइट? विद अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट, बट इट डिडंट डू। व्हाई? ईच एंड
एवरी अलोकेशन जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हुई थी वो शॉर्ट की तरफ हुई थी, ना कि लॉन्ग की तरफ। सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक इंड्यूसमेंट बिल्ड हुआ, तो उस इंड्यूसमेंट के हिसाब से अगर मैं अलोकेट करता हूं मेरा ट्रेड, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, राइट? सो येट देर इज अ रिजेक्शन पॉइंट। कितना रिजेक्शन ले सकता है? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुआ है, that could be one of the first rejection points that we can look at this range। अगर ये फॉलो अप नहीं होती है तो it will tend to create a movement in the directions of the continuous demand allocation, coming down to our execution point, that is 15 minutes. In 15 minutes, we will identify in today's price action what does the market is trying to indicate. Okay? पूरा हमारा wave right tide क्या है? Bearish है। When there is a bearish allocation, what do? We have to understand in today's moment, mark out today's line of conduct। ये हमारा आज का दिन है। आज का दिन में क्या किया है? मार्केट क्रिएटेड द फर्स्ट डिमांड, जितना फर्स्ट डिमांड है उतना ही मूवमेंट यहाँ पे दिया है, राइट? अभी यहाँ पे सप्लाई भी बिल्ड हुआ, तो कितना सप्लाई बिल्ड हुआ है? जो कि आज का दिन का जो फर्स्ट सप्लाई है उतना ही सप्लाई बिल्ड होके यहाँ पे सस्टेन हुआ है, राइट? जब सस्टेन हुआ है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? मार्केट विल टेंड टू कंटिन्यू द रैली। मार्केट विल टेंड टू कंटिन्यू द रैली टिल वेयर? कहाँ तक मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दे सकती है? येट हमारा फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट ये था। सेकंड लास्ट रिवर्सल ऑफ टुडे एशियन सेशन could be in the range of 95061.44 as first one, second one as 94793.65 as the second one, right? This is how you have to be looking into the directions, not sitting in the opposite directions of the market and give the SLs। किसी को कोई डाउट है BTC and gold में? Please do ask। Guys, hit the like button। Anyone has any doubts? Please do ask। Don't say me that you guys don't have doubts। Done, sir। Good morning, Venkat। Okay, now let's come down to Indian sessions। हल्का सा ग्लैम्स देख लेंगे, ग्लैम्स। Nice to hear my name from you, sir।
ओके, कोई डाउट है? प्लीज डू आस्क। राइट, अगर इंडियन सेशंस में व्हाट डू यू हैव टू नोटिस? स्टार्ट फ्रॉम 1 hour. What is 1 hour indicating? Which direction the market is? Market is in the direction of the current structure of movement. What is current structure of movement indicating? Current structure of movement is indicating the market is in the zone of an extension, right? Which is that extension zone? The high point to the second low point. And what do you notice? Market is in the zone yet. Sorry. Yeah. Same way with बैंक निफ्टी as well. What do you notice? हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ यहाँ पे, कंटिन्यूटी, कंप्लीशन, move the trend towards down. Where is market tend to be in? The market is tend to be in the zone of an extension 1.618 to 2 range. So यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक छोटा सा इंड्यूसमेंट चाहिए फॉर ए मोमेंट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर हमें एक छोटा सा इंड्यूसमेंट मिलती है, 1 2 3 कंटिन्यूटी, राइट? सेम वे 1 2 3 कंटिन्यूटी, right? This should be your way of looking into the structures, not prior to that. So here, what is the one thing that you have to notice? हमारा 1 hour bearish है, right? Remove the levels. Post removing the levels, come down to 15 minutes, allocate the direction, right? So हमारा direction मिलने के बाद 15 minutes में आके what do we notice? Sorry. We don't use retracements in Indian sessions. We use extensions in Indian sessions, right? अभी हमारा 15 मिनट, what is it indicating? 15 minutes was indicating a movement towards the short. A movement towards the short मतलब जितना अलोकेशन दिखाता है उतना ही अलोकेटिंग पावर मार्केट में आती है। मतलब इफ अ कैंडल इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रही है, उस डायरेक्शन में आने के बाद कितना मूवमेंट दिखाएगी मार्केट? जितना आपको वॉल्यूम अलोकेट करते हुए दिखेगी। वॉल्यूम कितना अलोकेट करते हुए दिख रही है यहाँ पे? जितना बड़ा अलोकेशन पॉइंट यहाँ पे दिखेगा उतना ही अलोकेशन पॉइंट आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी में दिखेगी, right? So because the gap away is not yet filled, थोड़ी देर में that could continue and complete the zone, बट उससे पहले लिक्विडिटी चाहिए ना, सबको रनिंग में बिठाना है, राइट? उस तरफ का मूवमेंट अलोकेशन देना है, राइट? तब जाके एक कंसेक्यूटिव अलोकेशन दिखेगी, उस अलोकेशन के बाद ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करके अलोकेट किया जा सकता है, not prior to that, right? And what is the second major thing that you have to wait here for? नए हो, पेशेंस 5 मिनट में आइए। करेंटली 15 मिनट भी हमारा बेरिश ही है, नो डाउट, राइट? सो इन दिस सिनेरियो यू हैव टू डू इज, क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन टंग ट्विस्ट हो गया, द आइडेंटिफिकेशन स्पेक्ट्रम किस तरफ का है, राइट? सो द आइडेंटिफिकेशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बैंक निफ्टी इज करेंटली too strong to be looking towards a bullish side, correct? So market क्या कर रहा है? Market is consecutively falling, right? When the market is consecutively falling, you take the nearest extension. Which is the nearest extension? This is your nearest extension. Where did the market open? Did the market surface at this zone? Yes, the market surfaced at this zone. And it break the level. Level break हो गया, extension को previous high में लेके जाओ, you will identify the major reversal zone area. That is from 48,261 to 4800. That is the major reversal zone because spectrum range क्या है? Bearish है market में.
राइट। जैसे ही वो स्पेक्ट्रम रेंज ब्रेक करती है एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट बिल्ड होता है, तो उस इंड्यूसमेंट के साथ ही ट्रेड ऑफ अलोकेशंस देखी जाएगी, उससे पहले नहीं, right? And people who trade in an Indian market make sure they trade in the money and at the money, not out of the money. Okay? So make sure on that circumstances and allocate the trades accordingly, not prior to that. Okay? सो दिस इज इंडियन सेशंस। जैसे ही एक अलोकेशन दिखेगी उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, नॉट प्रायर टू दैट। Let the market tend to give the retracement. Definitely, you guys will have a good moment. Through that good moment, we will look for an execution, not prior to that. Okay? वेंकट, होप यू गॉट द पॉइंट। कहाँ से हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारा एक्सटेंशन पॉइंट। Guys, hit the like button. If you're new to the stream, welcome to the stream. If you're liking, if you're learning something new from the channel, do like, share, and subscribe. And wait, let the market indicate you the movements, not prior to that. Okay? Anyone has any doubts, please do ask. And hit the like button, guys. एक सेकेंड के लिए लैग होगा, राइट? उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर लेना। Yes, you can. You guys can refresh it now. Okay.
180 pips running in gold, looking for an add-on in here. सस्टेनेबिलिटी बिल्ड होने दो, उसके साथ देखना, नॉट प्रायर टू दैट. ओके. सर इनसाइडर लिक्विडिटी के ऊपर एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो. डेफिनेटली आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑन इनसाइडर लिक्विडिटी. Let the market build the insider liquidity first, right? Just in scenario, we do notice, what do we notice over here? There was an insider liquidity. So if you notice, this was the movement 1, this was the movement 2, this was the movement 3, right? अभी इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा? एक पॉइंट क्रिएट होगी हमको, राइट? 1, 2, 3. This is your insider liquidity, that was your target. That's how you identify an insider liquidity. लाइव में दिखाने के लिए let the market build an instrument at this point, then only, not prior to that. ठीक है? Guys, hit the like button. ब्यूटीफुल. कंटिन्यू होने दो. इसका टारगेट अभी पेंडिंग है, टारगेट तक पूरा आने दो, विच इज 94,720 का रेंज. एक्सटेंशन अलोकेट करो, उस एक्सटेंशन के हिसाब से जो नंबर अलोकेट होगी उस अलोकेशन तक ही, which is 9571 first, 94,800 is the 200% range. उस रेंज ऑफ अलोकेशन तक बनने दो, देन मजा आ जाएगा. ऑन द ब्रेक एंड सस्टेनेबिलिटी फट करके एक कैंडल आएगी. Let's see into Indian sessions. Beautiful. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देयर. अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट हो जाने दो. निफ्टी में आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ट्रेड ऑफ अलोकेशन कैसे मिलेगी आपको. छोटा सा इंड्यूसमेंट, मतलब यहाँ पे बिल्डअप आना चाहिए अभी. जैसे ही इंड्यूसमेंट बिल्डअप आती है, देन कंटिन्यूटी. सेम विद बैंक निफ्टी, एक छोटा सा इंड्यूसमेंट, कंटिन्यूटी. ठीक है. छोटा सा इंड्यूसमेंट यहाँ पे, देन. Anyone has any doubts regarding to the markets understanding of allocations, please do ask.
we will help you out. And welcome to all the new members into the channel. Sir, can I look for a short? Wait, never trade in hurry burry. मार्केट बताने दो, मार्केट को इंडिकेट करने दो, पोस्ट दैट ओनली, नॉट प्रायर टू दैट. अंडरस्टूड? कहीं पे भी हो, just not in Indian sessions, everywhere you have to go through the same thing. So need to trade a demo account in Exness with stock or crypto to enter. BTC gold. Don't trade in stock. नवीन कुमार उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, राइट? महाशिवरात्रि के दिन आ जाएगी वो वीडियो. उस वीडियो को देख लेना, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. 2 और दिन, वेनसडे को लॉन्च होगी वो वीडियो. ठीक है. यस सर, वेयर टू एंटर. एक आपको राइट हैंड साइड में बाय एंड सेल दिख रहा होगा, कॉलम. ओके, right? Just click on which direction you want to take the trade on. Then you will get 2 tabs. ओके, इसके ऊपर आपको एक बॉक्स ऑफ अलोकेशन दिख रही होगी, वन क्लिक ट्रेडिंग करके, उसके ऊपर क्लिक कर लेना. राइट, देन यू हैव टू एंटर द वॉल्यूम ओवर हियर. सर, माय एक्सनेस अकाउंट इज रेडी. डू शेयर द स्क्रीनशॉट of your Exness, right, with a trade executed in the direction, then you will be added into the group. सर, बीटीसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीडियो कब आएगी? आएगी, राइट? उस पे जाके वॉल्यूम मीन्स इधर ट्रेड अलोकेट करना, राइट? एज यू आर ए बिगनर, look for a trade allocation from 0.1 to 2, 0.2, not more than that, राइट? आप बीटीसी में ट्रेड अलोकेट कर सकते हो टिल 20 लॉट. डेमो अकाउंट है करके 20 लॉट से अलोकेट मत करना. ओके, सीखने के लिए स्टार्ट, जितना आप डिप्लॉय करने वाले हो उस डिप्लॉयमेंट के हिसाब से ही देखना. या इफ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय above 1000, then 1 lot. Okay, 1 lot will be your entry circumstances. Okay, Venkat.
सर बीटीसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीडियो कब आएगी? आएगी आएगी, बहुत जल्द आएगी। यस। And Rajiv, do share your screenshot in Exness, sorry, in Telegram, so that you will be added into the group. अभी भी किसी को डाउट है कि वर्क नहीं होता है, तो भ्रम से निकलो गाइस। The entire charts are worked on the concept of math, एंड आपको कोई भी चीज को डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इजी एंड सस्टेनेबल वे में क्रिएटेड मूवमेंट्स अलोकेट होंगे, उस अलोकेशन को मैथ के जरिए ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? नॉट थ्रू एनी इंडिकेटर्स clearly saying you all this. कंटिन्यूटी कैसा चाहिए? इंड्यूसमेंट कवरेंस चाहिए अभी यहाँ पे, एक कैंडल बिल्डअप, उसके बाद कंटिन्यूटी। अगर शॉर्ट के लिए अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो प्राइस एक्शन इज सिंपल, इंडिकेशन पॉइंट 1 2 3 यहां तक आएगी, एंड यहां से रिवर्सल अगर क्लोज होती है तो। ठीक है, टू ऑप्शंस अभी दे रहा हूं। फर्स्ट वन, क्लोजर ऑफ द इंड्यूसमेंट यहां से कंटिन्यूटी, राइट? अगर लिक्विडिटी लेना है, ये पुल बैक के जैसे है, इन लोगों को सब जो बिठाया है, अगर उनका लिक्विडिटी लेना है तो एक्सटेंशन पॉइंट तक, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मूवमेंट। ओके, बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम, इंड्यूसमेंट प्रॉपर बिल्ड होने दो, उसके साथ ही अलोकेशन। 22,540। सर निफ्टी कहाँ तक आप देख रहे हो क्रैश? 21,000, 19,000, 17,350, that are the three levels where I will be adding into the investments, not prior to that. Okay,
Hope that is clear. Good morning, Sagar. Sir, MC concept में when and what value we have to add or subtract. Whichever the reversal area is being identified and looked at, right? Just in the scenario, what do you notice? Wherever the reversal point is identified, that will be your zone of conduct, right? As the scenario in this circumstances, this was the reversal point because the previous math was calculated through this. Okay. So here, which is the previous allocation and where you will be looking it from? इसका जो mathematical number होगा उसका reversal point ये है, right? From this point of action you will be calculating it again. Okay. उसका आके हमारा जो 0.375 है that target is hit. Okay. So अभी next reversal area where you will be identifying it जहाँ पे movement एक proper inducement build करता है, that's when you will be looking for the next structure, not prior to it. Okay, Sagar? Sir, please once again explain, didn't understand properly.
हाँ 2 मिनट दे दो, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो गए। नहीं नहीं स्मिता मैम, रॉन्ग पॉइंट है। गाइस रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शंस में क्यों बैठ रहे हो यार? अरुंधति मैम ऐड कर लेना और थोड़ा, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, द circumstances remains the same. सर इंडियन मार्केट्स में इंड्यूसमेंट 15 मिनट्स में देखना है या 5 मिनट्स भी चलेगा? 15 मिनट्स में आप इंड्यूसमेंट देखोगे ना, आपको ट्रेड अलोकेट होने देगा ही नहीं, मार्केट मूवमेंट दे देगी। इंडियन मार्केट 5 मिनट्स में इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना, ठीक है? 15 मिनट्स में डायरेक्शन, 1 आवर का ट्रेड अलोकेशन, टारगेट्स। ओके, एंड फाइनली बीटीसी का टारगेट है क्लोजर ऑफ नाइस 80 pips. MTSL will be at 50 pips and hold on to the trade till a small inducement is built at this range. Keep it up guys. वेंकट, वर्षा ने आपका फोटो शेयर किया, जो आपने शेयर किया वो एक्सटेंशन का वैल्यू गलत है। आपको टीम ने एक्सटेंशन वैल्यू शेयर किया था ना, व्हाई डिडंट यू यूज दैट वैल्यूज? ओके, सो सागर आपकी बात पे आता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ डायरेक्शन, राइट? सो सिंपल है, whichever side the direction reversal generates, right, उसका prior direction find out करो। how do you identify a prior direction, right? 14th का highest point पकड़ो, उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नंबर निकालो, राइट? उसका रिवर्सल पॉइंट मिलेगा। सो दिस इज द रिवर्सल एंडिंग पॉइंट, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन से फिर से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का वैल्यू को यूज करो, it will show you one number that will be your next reversal point. From this reversal point of action, you will add another MC point of action here, and from here whatever the number comes, that will be your next plan of action, right? And calculate the MC concepts through all the three numbers, 0.3 wala, 0.5 wala, 0.6 wala. Through this you can be till the point where the reversal is indicated and generated and gone through. ठीक है? Sagar, is it clear now for you? Hit the like button, guys.
क्या बोले? सर निफ्टी में डाउन साइड पोजिशन बनाया है फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम, विल गेट आउट एट इंड्यूसमेंट और बिफोर रिवर्सल, राइट? इंड्यूसमेंट क्रिएट होने दो, उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड से निकलना, राइट? प्रीमियम डीके, आज कौन सा मंडे है ना, उतना डीके नहीं होगा। सो टिल दिस पॉइंट ऑफ एक्शन यू कैन बी इन द ट्रेड। फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट का जो टारगेट है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन तक आप बने रह सकते हो। रैंडम आर्ट्स आपका नाम क्या है? सॉरी। गुड मॉर्निंग राकेश। सर टेलीग्राम चैनल के बारे में बताइए। सर हमारा टेलीग्राम चैनल में कुछ नहीं है। योगेश। ओके योगेश। टेलीग्राम चैनल इज ओनली फॉर एक छोटा सा ग्रुप है। आई थॉट एग्जैक्टली लाइक यू एक्सप्लेन। ओके, बट मेक श्योर एमटीएसएल योगेश बने रहना, कहाँ से भी बैठे हो। ठीक है। तो नवीन, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक छोटा सा ग्रुप है। उस छोटा सा ग्रुप में अगर आप एक्सनेस हमारे लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हो, उसमें लेवल्स मिलते हैं, राइट? हर एक ट्रेड्स का, फोरेक्स, बीटीसी एंड क्रिप्टोस का अलोकेशंस दिखते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आसान होगी। हम टिप्स नहीं देते वहां पे, जो भी डायरेक्शंस मिलता है उस डायरेक्शंस के हिसाब से अलोकेट होके चलती है, दैट इज एलटीडी लेवल्स। जैसे कि अगर नोटिस कर रहे हो, लेट्स गो टू 1 आवर। ये ड्राइंग तो मैं आपके सामने ड्रॉ किया था, करेक्ट? एंड दिस इज द कोड व्हाट वी हैव जनरेटेड, वेयर एग्जैक्टली इट्स टेकिंग द रिजेक्शन। ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, दैट्स हाउ इट्स बीन आइडेंटिफाइड। यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा, उस रिजेक्शन के साथ फिर से ऐड होगा। ओके। राकेश, स्क्रीनिंग करो, राइट? कोई भी डाउट आए पूछो, बिकॉज यू ज्वाइन लेट। Do it by yourself so that you can understand how to learn, and it will make you easy in the future. Okay, Naveen? Sorry. Yeah, okay. Rakesh, get that Exness account mapped, कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करो। बात करने के बाद दे विल गिव यू अ पार्टनर चेंज कोड। वो पार्टनर चेंज कोड फॉर्म फिलअप कर देना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे, उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको कॉपी पेस्ट कर देना, आपको वो हमारे इसमें ऐड कर देंगे। Venkat, you are planning to jump from step 0 to directly 100. There are 100 steps. Go by step 1, step 2, step 3, step 4. Right? Don't hurry while you learn. ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಿ ಟಿ ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿರಾಗಿ
ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ 100% ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತರ ಆಗಿ then you move on to the other concepts, right? So what will happen when you tend to move from, okay, just for an example, let me give you a small example. It won't bore you for sure, right? So you're learning one chart, you have applied something, it's a new thing. Okay, I got to know the circumstances, I know the extension levels, I know everything. Will be your mindset execution. जब ये mindset आपको बोलेगा ना इस point of action से क्या करेगा, जहां जहां पे आप एग्जीक्यूट करने जाओगे हर एक बार आपको उल्टा ट्रेड में बिठाएगा, रॉन्ग साइड डायरेक्शंस में ही बैठोगे आप. सो फर्स्ट get perfect in first direction, right? First get perfect in identifying directions, get perfect in one chart, right? Then I am also from Karnataka. Great Sagar. I am from Mumbai, but I know Kannada little bit. Good morning, Vansh. Right? From this point of action, when you identify the directions, just trade for 2 months in the same chart. Don't mix. Keep two charts, whichever charts that you want to trade in, trade for 2 to 3 months in only that two charts. Okay? Post that, you will identify, okay, now the market is going in the direction. I have to identify this supply, I have to multiply this supply. Whatever the retracement is as per the previous, right? When you get attracted to the chart by seeing it, then you move on to multiple chartings. Not prior to that. That will harm you. You won't be able to be perfect in even one of them if you do that. So always make sure that you are working on one chart and you're making sure that one chart is in your mind, then move to the next. ओके, एक ही साथ में हर एक चार्ट में मत जाना. क्या बोले वंश? Sir, I was back testing a little, but in gold sometimes in supply we take the wick, but other times we don't. To since I get confused. क्या confusion क्या है उसमें? अगर बहुत बड़ा विक है तो वो विक लेने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा विक है तो लो, प्रॉब्लम नहीं है. ओके. So just in case, let me come into the circumstances of the allocations, right? एक बड़ा wick वाला point देख. Okay. Let's take under consideration of this big wick, right? So sometimes what happens, we just have to take wick to wick, right? Then you will be able to get and capture that movement, right? अगर यहाँ पे wick छोटा है, then multiply होता है, right? That is the identification structure that you have to work and sustain in. एक एग्जाम्पल था, डू बैक टेस्टिंग. समटाइम बैक टेस्टिंग क्या होता है, पूरा करो ना. टेक जनवरी till February 24th, do the back testing, you will come to know. अब बीच बीच में बैक टेस्ट करोगे, you won't be able to sufficiently identify the moments. Yes sir, this was because I stuck in some chart, need to check those stock levels. हाँ,
जो वर्षा ने शेयर किया वो लेवल्स के ऊपर बने रहना। ओके। हिट द लाइक बटन्स। बटन्स बोल रहा हूँ, बटन्स, हिट द लाइक बटन। ओके वंश, होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई सेड यू। इस एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रही थी, बैक टेस्टिंग एंड साथ में कॉलेज एग्जाम्स है सारे रोज। ओके, आराम से, नो वरीज। Good morning, Anupam. Good morning, sir, and have a great day ahead. Definitely. Thank you so much, and you too have a great day ahead. Sir, I have shared an analysis. BTC exited at 600 points. वर्षा, वंश का एनालिसिस शेयर कर दो। गलत है।
Vansh, it's wrong. Your previous supply is correct, 4 hours allocation is wrong. Supply allocation जो आपने मार्क किया वो गलत है. Understand the direction, no? किस तरफ का डायरेक्शन है उस तरफ का अलोकेशन होना चाहिए ना. उसको ऑपोजिट साइड का करोगे, हाउ विल इट बी इन द राइट मूवमेंट? इट विल ऑलवेज टेंड टू गिव यू अ रॉन्ग मूवमेंट, करेक्ट? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे आपको analysis of 4 hours should be always in the direction of the wave. What is wave saying? Wave is currently in a POI, right? So at that stance, आज का जो creation of demand है वो किस तरफ का है? Bullish है, correct? So bullish circumstances में what will your drawing allocation looks like from the inducement area till the first retracement point, right? That will be your current supply of allocation that you will be looking for. ठीक है? Sir, as the MC level of gold is 2906 and it is not received, so still we are looking for the short opportunity. Anupam, clear cut, we had said that we have to draw and allocate three levels: 0.618, 0.5, and 0.375. Once that level is allocated, then is when you will be looking for a change. अगर वो टच नहीं हुआ है, then again it will build up a reversal area. From that point of action, we will be looking for a new allocation, not prior to that. ठीक है? Good morning, Rashmi. Good morning, Amrita. Guys, system will lag for 2 seconds. Post that refresh करने बोलूंगा तब refresh कर लेना. वो भेजने दो यार, मेरे को आते ही मैं बोलूंगा सही है कि गलत. ठीक है?
सर लैग हो रही है, पता है। Incoming mail. Incoming mail. गाइस रिफ्रेश कर लेना। हाँ वंश, ये करेक्ट है। राइट, दिस इज राइट। किसी महापुरुष ने टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा है। सर दूसरे लोग तो ट्रेड्स लाइव पे दिखाते हैं कैसे करना है, आप भी दिखाओ। सर थोड़े लोग बोलते हैं ट्रेड को चार्ट में 1 मिनट में लगाता है। एक सेकंड। 1 मिनट में लगा के यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एग्जिट करो भी बोलते हैं, तो हम कर दे। सर सीखना है तो रह सकते हो, अगर ट्रेड चाहिए तो दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर यू। सीख के एग्जीक्यूट कर सकते हो तो करो। एड ऑन पॉइंट सब हम भी बताते हैं। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टिप्स, सॉरी, नॉट द चैनल। अभी वंश तुमने जो सप्लाई ड्रॉ किया है, तो प्रीवियस अलोकेशन के हिसाब से व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ, राइट? द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू ड्रॉ इज द प्रीवियस डिमांड। वो प्रीवियस डिमांड को अलोकेट करो। प्रीवियस डिमांड कौन सा अलोकेट करोगे? जो आज का मूवमेंट का जो अलोकेशन पॉइंट है, जो कि ये आज का डिमांड है, करेक्ट? तो उसका प्रीवियस डिमांड जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, राइट, उस डिमांड को अलोकेट करके स्ट्रक्चर बिल्ड करो यहाँ पे। सो यू विल फाइंड द रिट्रेसमेंट पॉइंट टू अलोकेट द ट्रेड्स अगेन। अगर लाइव अगर लाइव देख अगर लाइव देखेंगे तो दूसरा इन्फ्लुएंसर जैसे गिफ्ट भी मिल सकता है एसएबी से। मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, सीखना है। थैंक यू अनुपम।
Okay, sir, trying and sharing it. Okay. सर 2045 की कैंडल जितना ही रिट्रेसमेंट नीचे आ सकता है ना सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूएस टाइम्स। अनुपम, यू आर लुकिंग इन यूटीसी राइट? यूनिवर्सल टाइम जोन। रेसिपी बुक, टोटली एग्री। क्या लिखा है ये? Anupam, the way Sir punches the trades, people who watches that will get the raise in equity. UTC होगा. Just give me a moment. सर की कैंडल जितना ही रिट्रेसमेंट नीचे आ सकता है ना सर, करेक्ट में कहूँगा। हाँ अनुपम, सी व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर 845 कैंडल, 845 कैंडल का डिमांड जितना है उस डिमांड को यहाँ पे अलोकेट करो, जैसे हमने यहाँ पे अलोकेट किया है, ओके। एंड व्हाट डू यू नोटिस ओवर हियर, the market is still in that zone, just wick is been created, right? For the backup, what you have to do, today's movement, right? UTC is today's movement. What do you notice? The candle from 2 o'clock of 21st till 2:45 of the 21st mark that demand, because that was your previous demand of today's allocation, right? आज का दिन जो शुरू हुआ था यूटीसी में, जो मूवमेंट यहाँ तक बिल्ड हुई है, उस मूवमेंट स्ट्रक्चर का अलोकेशन यहाँ पे अलोकेट करके रख, right? So you have two demand allocations at the same point. So this demand allocations will be identified on basis of which point of action the inducement will be created. Abhi, what do we notice? We do notice an inducement which is being creating over here, right? So we have red, green, right? So if it sustains as per the 845 candle over here, then the continuity will be continued and we can look for a completion point, right? If not, the market will tend to come in this zone, then the movement could get allocated again, not prior to that. Okay. सो दो लेवल का कंफर्मेशन आपके पास होगी। एक, आज का दिन का ही जो 8:45 आपके टाइम जोन के हिसाब से जो है, वो अलोकेशन पॉइंट का एक लेवल मिला, जो कि अभी भी उसी रेंज में है। फॉर ए बैकअप, आज का दिन का प्रीवियस डिमांड, मतलब मंडे जो स्टार्ट होता है वो संडे का लास्ट एक घंटे का अलोकेशन के साथ शुरू होती है, राइट? उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन प्रीवियस डिमांड होगी, उसका एक अलोकेटिंग पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके रख देना, so that you will be having a right point of action to understand from where the real movement could occur. Okay, sir. So last demand also we need to observe, understand, right? This last demand is observed only on Mondays, because
We are having a 2-day gap time frame and the market tends to open gap up or gap down. At that point of range, we have to identify. Sir, BTC दिखाओ ना. Exactly extension point से rejection level. अभी लॉन्ग के लिए ट्रेड देखना है तो क्या करना है? यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बिल्ड होना, राइट? रिट्रेसमेंट जब तक बिल्ड नहीं होती है तब तक नो अलोकेशन. फोमो हो रही है, डायरेक्ट एंट्री लेना है, नॉट आवर कप ऑफ टी. Sir, in 15 minutes, we always have to take the previous day demand, right? No, no, only that is on Monday. Remaining Tuesday means Monday London session से लेके Friday तक same day demand and supply. सिर्फ आज का दिन में we will be taking the previous day of demand because market were closed for 2 days. Post that we had a gap up opening. So to allocate the right point, we will be looking for that. Good morning, Agastya. अगस्त्य कुरियर भेजा था यार. उसको डीएमसीसी में प्लीज ये कर देना, जमा कर देना. Yet that is just a backup, okay? बिकॉज आज का दिन का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसी रिट्रेसमेंट पॉइंट की रेंज में है अभी भी, राइट? बिकॉज इट्स जस्ट क्रिएटिंग द विक्स. Till the time it doesn't create a body beyond this line, the market will tend to be on the same spot of action. As you notice, the inducement is created, right? कल के दिन हमने एक सेशन मीन्स जो वेबिनार था, उस वेबिनार में क्या बात किया था? What is market trying to do in this zone? वॉल्यूम अलोकेशन देखो, कुछ चेंज हुआ है? नो, राइट? अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कैंडल कितना छोटा है, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन में अलोकेशन देखो कैसा हो रहा है. गए जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो. कैन वी कैलकुलेट द इनसाइडर लिक्विडिटी एज दिस ट्रेंड? इनसाइडर लिक्विडिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे है क्या, वो बता.
इस जोन में है क्या? कुछ नहीं। उस जोन में कुछ बिल्ड होने दो, उसके बाद ही, उससे पहले हम नहीं देखने वाले हैं। Patience is the only key. Wait patiently, you will definitely get executions. If you're not executing in the directions, then you will tend to close your account and make sure that you lose your capital. Anupam, how do you trade? You trade in a pop form, is it? Prop form. Sir, did any trades taken today in BTC and gold? BTC लॉन्ग में है, सॉरी BTC शॉर्ट में थे, वो क्लोज हो गया। गोल्ड लॉन्ग में है। टाइम भी बता देता है। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दैट इज एट 7:55। यूटीसी के टाइमिंग के हिसाब से दैट इज दिस कैंडल, 2 बजे। सर स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ना, कहाँ पे भेजा है? हम कहीं पे भी नहीं भेजे। सर लॉन्ग कब देखोगे? जब रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट आने के बाद एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का दो या एक, सॉरी, दो और तीन कैंडल इंड्यूसमेंट बिल्ड होगी, तभी बीटीसी में लॉन्ग की तरफ देखेंगे, उससे पहले नहीं। सर गिव मी ए हिंट। सर आई एम नॉट एबल टू एंटर। बीटीसी में एक चीज ऑब्जर्व कर लेना, अगर एंट्री देखना है ना, हमेशा एक्सटेंशन पॉइंट्स में लॉन्ग के तरफ देख रहे हो तो ये पैटर्न आएगी, शॉर्ट के तरफ देख रहे हो तो ये पैटर्न आएगी। त्रिशूल। अगर ये पैटर्न बिल्ड हुआ है तो डेफिनेटली मार्केट विल टेंड टू रिवर्स फ्रॉम दैट एरिया। एक बार दिखा देता हूँ। हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देख लेना। ये हमारा फ्राइडे का शॉर्ट ट्रेड था, करेक्ट? मधुसूदन जो लिए थे रनिंग में 99,000 में, उनका ट्रेड भी जो एग्जीक्यूट हुआ था वो फोमो में हुआ था, बट उनका टारगेट हिट हुआ, जो कि 94,000 का था। यहाँ पे नोटिस करो, 1 2 3, 1 2 3, कीपिंग इन माइंड ये मूवमेंट छोटा है, बट वो मूवमेंट पूरा 1000 पॉइंट का है, ठीक है? नेक्स्ट, wherever you see a reversal, you will tend to see a threshold first. 1 2 3, right?
ऊपर के लिए भी अगर मार्केट गया है, व्हाट डू यू नोटिस? 1 2 3, दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू बी लुकिंग एट। दिनेश गलत साइड का ट्रेड लिया है यार। किस खुशी में उस साइड का ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन किया है मेरे को पता नहीं। ओके वेंकट, whenever there is an allocation, the market will tend to give you an indication of a external liquidity in BTC, only in BTC। कहीं और मत देखना। ओके वेंकट, सर शुड वी वेट फॉर बीओएस आफ्टर त्रिशूल? सर त्रिशूल मत पिलाओ, मैं वो अच्छा मीन्स एग्जांपल दे रहा था, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लिक्विडिटीज। ओके इजी समझाने के लिए वो पैटर्न बोला था, त्रिशूल जैसे दिखता है। ओके बीओएस का वेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे त्रिशूल बिल्ड हुई, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे बिल्ड हुआ, इसके बाद मार्केट कंटिन्यूटी की, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके एक रिट्रेसमेंट आती है, राइट? वो जैसे ही रिट्रेसमेंट अलोकेट होता है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। सेफ खेलना है तो इस पॉइंट ए बी सी एक्सटेंशन ड्रॉ करो, जो भी आपका टारगेट निकलेगा वहां तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते। दिस इज फॉर बीटीसी ओनली। एंड अगर वो भी डर लग रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे सप्लाई बिल्ड हुआ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल थ्रेशोल्ड मूवमेंट, with this movement market tend to take the rejection। हाँ ओके वंश, प्लीज डू कंटिन्यू। ओके, जो ये सप्लाई है उतना सप्लाई का ट्रेड, that will be the next way of looking into it। We'll come back again in the evening session। Okay Vansh, take care। That is how you look for an identification of a trade, Venkat। ठीक है? So always wait, let market tend to give you the indications, right? The indication is this only, the reversal indication is the threshold। उसके बाद जो डायरेक्शन है एक्सटेंशन तक का, उस डायरेक्शन में सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट करके चलो।
What you said as A, B, C and calculation, this is simple understanding for people like me, sir. Great. Okay. हमेशा मार्केट के अगेंस्ट ही रहने का इरादा है क्या मिस्टर डीसी? मिस्टर दिनेश चौहान। स्क्रीनिंग करो ना। नो सर। वेयर इज योर सप्लाई एंड डिमांड रेंज? ड्रॉ द सप्लाई एंड डिमांड रेंज। एक्सक्यूज मी। सर इंडियन सेशंस साइडवेज है। Yogesh, be careful on the premium decays what you go through. सर ये पीओआई नहीं है क्या? इंडियन मार्केट में पीओआई बिल्ड हो गया ना, समझ लेना उस दिन पूरा मार्केट वन साइडेड ट्रेंड रैली देगी। थोड़ी देर के लिए एलटीडी लेवल्स बंद करो ना। कंफ्यूज नहीं हो रहा है तेरे को दिनेश? परफेक्ट। डिमांड ड्रॉ करो अभी उस जोन पे। 15 मिनट में आके ड्रॉ करो। फर्स्ट डिमांड कौन सा डालोगे? That is the supply that you have drawn. That is correct. Okay. The demand. Retracement कहाँ तक आएगी वो वाला? वो फ्राइडे का दिन हो गया। आज का दिन का डिमांड भी ऐड ऑन करना उसमें। आज का डिमांड कहाँ पे है? वो रहने दो वहां पे।
वो वाला नहीं, आज का दिन का, यस। allocate that and keep it into the zone जहाँ पे अभी करंट मार्केट है। Is the market still in the zone where it is? Then why were you sitting into the wrong side of the trade? That's my question for you. Guys, अभी भी क्लियर कट बोल रहा हूँ, ट्रेड व्हाट यू गाइस सी, नॉट यू व्हाट यू गाइस थिंक। जो दिखता है उसे ट्रेड करो, जो आप सोचते हो उसे नहीं। One and only most important thing is that never draw the wrong allocations. ठीक है दिनेश, going forward make sure that you don't repeat it again. सर इनसाइडर लिक्विडिटी के ऊपर एक वीडियो बना देना। हाँ बनाएंगे, डेफिनेटली। एक्सक्यूज। अगर समझ लो ये लंदन सेशन पूरा यहाँ तक कवर अप लेगा ना, ऐसे ही करंटली 11 स्टार्ट तो हो गया, तो 12 o'clock तक यहाँ पे कवर अप लेगा ना पूरा, तो इट विल टेंड टू जस्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर मूवमेंट शॉर्ट के तरफ आना होता तो अब तक के लिए एक इंडिकेशन दे चुकी होती। व्हाट वाज दैट इंडिकेशन? फेक ब्रेक। Sir, in our analysis, demand is red candle and supply is green candle. Yes, because retailers demand is green candles, no, and supply is red candles, right? The structure is opposite because we are looking in a way of other allocations. हमेशा याद रखना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में एक ही चीज फॉलो होती है, जैसे आम लोग देख रहे हैं उसका ऑपोजिट हमें दिखना चाहिए। अगर आम लोग ऊपर के लिए देख रहे हैं, हमारे लिए वो रिट्रेसमेंट अलोकेशंस होगी, वो मेन रेंज होगा हमारे लिए। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड रिवाइव सप्लाई एंड डिमांड।
सो एग्जांपल देता हूँ, राइट? ये जो सपोर्ट में से गया, राइट, व्हाट विल पीपल वर्क ओवर हियर एट दिस जोन? इस जोन में क्या करेंगे रिटेलर्स? अनुभव, ओके, पुल बैक कैंडल आया है, ऊपर से विक क्रिएट हुआ है, रिजेक्शन आई है, ये मेरा 0.3 का फिब लेवल है, आई विल टेंड टू एग्जीक्यूट ए ट्रेड एट दिस पॉइंट, राइट? किस तरफ के लिए? शॉर्ट के लिए। शॉर्ट अलोकेट हुआ, मार्केट ने क्या किया? इंडिकेशन दिया उन लोगों को, पूरा बड़ा रेड कैंडल बना के यहाँ पे, एंड दैट रेड कैंडल वाज ऑफ proper 40 pips, and market tend to take a reversal and start hunting them, right? Hence we look it in a opposite direction of the markets, हमेशा। ऑल क्लियर सर, थैंक्स। सो हमारा जो आज का दिन का डिमांड है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस डिमांड पेंडिंग है यहाँ पे, ओके, विच इज दिस रेंज, जो मेजर इंड्यूसमेंट एरिया जहाँ पे बिल्ड होने वाली है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर एक कैंडल सस्टेन होती है, you can have a notice of insider liquidity again. How? Sorry. Box number one, box number two. Point one, point two. Okay. So this will be our insider liquidity range. It's just hunting people down. बैठो, आप बैठो, मैं बड़ा बड़ा कैंडल बनाता हूँ, आप बैठो। रिटेलर्स पर्सपेक्टिव में बड़ा बड़ा कैंडल इज एनीथिंग अबाउट 20 pips इज अ बड़ा कैंडल, okay? Hence they tend to close at the range of 30-40 pips का range. They will never tend to hold the trade long, क्योंकि एक एक बार मार्केट इधर तक आके फिर से जाता है, hence that is the very important thing that you guys have to understand. ये तुम्हारा डिमांड इतना नीचे क्यों है दिनेश? कहाँ से ड्रॉ किया? ओके ओके, सही है, सही है, सही है। वो मेरे को रेड कैंडल के नीचे दिखाओ, उसके लिए।
नहीं नहीं अंबिका, MTSL लगा लो ना अंबिका. When the market has given you nice 500 points in BTC, why do you have to keep it at CTC? Move it at 400 points MTSL. Okay. Sir, how does LTD screening look like? Can we see once? बहुत बड़ा चीज पूछ लिया. ओके, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, स्क्रीनिंग नहीं दिखा सकता हूँ. चैट्स भी दिखाना. पागल हो गया. I can show you only the screening. दिनेश, स्क्रीन बड़ा छोटा करने से कुछ नहीं आता, पेशेंस प्ले बेटर. गाइस 2 सेकंड के लिए लैग होगी, उसके बाद रिफ्रेश कर दो. ओके, दिस इज हाउ स्क्रीनिंग लुक्स लाइक. ये क्लाइंट का स्क्रीनिंग दिख रही है, उस स्क्रीनिंग के हिसाब से. ठीक है. और हंसो.
बॉट ने दिनेश को भी नहीं छोड़ा। ओके सर। तो कैपिटल्स क्यों यूज कर रहा है भाई? सर वो मेरा स्क्रीनिंग है, मेरा स्क्रीनिंग क्यों दिखा है? Yesterday's session was awesome, sir. Thanks for taking your time on a weekend and explaining things. Thank you. Market is still in today's demand zone only. Yes, still in the demand zone. Let the market give the explanation why. उससे पहले नो एग्जीक्यूशन। मार्केट बताएगा किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले। It will always tend to give you an indication. The trades will be executed in that indication only, not prior to that. Okay? Where are you from, Anupam? Message from Mr. RP. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ashif. Where were you on Thursday, Wednesday, Friday? I am from Hyderabad. Telugwada. Nice. Wow, I love biryani in Hyderabad. Hi, Nightbot. यही करते रहो। देखो रिप्लाई भी दिया तुम्हारा बॉट।
गाइस अगर आप लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हो, make sure you guys start at somewhere around 6:37. Please visit Hyderabad. Will make you eat the best biryani here and also halim, which is Ramadan special cuisine. Finally, मेरा वेलकम किया नाइट बॉट ने, लव्ड इट. भाई हलीम के बारे में किसने बात किया? लाइव स्ट्रीम में चल रहा है. It's a dish. Definitely on the next tour to India. सुलेमानी चाय, हलीम, बिरयानी सुबह सुबह मजेदार. Yes, I do cook. Okay. Recipe book. Do you cook anything? Yes, I do. सच में? Yeah. I cook gold and BTC. It's a fermented wheat with smashed mushrooms served hot with tangy lemon juice on the top. You said a veg version of it. Sir, please share the recipe. Veg version, non-veg version. Guys, finally in the demand zone.
यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होने दो, इंड्यूसमेंट के साथ ही gold could close below today's demand, and I think it could go low further to complete Friday demand. Right? It's in the Friday demand zone only. No, this is the Friday demand. This is the Friday demand zone. What is the next thing you have to look for? Sustainability. Okay. Guys, थोड़ा lag होगा. थोड़ा सा lag होगी. Yes, you guys can refresh it now. Sir, why does it lag? Sometimes we do some things which is unexpectedly expected. So now you guys can refresh and it is back in the game. Unexpectedly expected. Yes, definitely. एलटीडी में थोड़े लोग ऐसे हैं, पता है वो जूम में है करके, ठीक है, सर्वर्स बैकअप लेके उसके थ्रू म्यूजिक चलाता है. That's the craziest part about them. Sir, I can hear Dol Tasha behind. Yes, there is a wedding happening next door. एंड जिसकी शादी हो रही है पूरा दुनिया जानता है उसे. And all the household has that one item from that store for sure. Listening music can
divert you at least from taking a wrong trade. Yeah, that's true. No doubt. Guys, hit the like button. जिसने हिट नहीं किया है फोड़ दो उसे. And thank you everyone for having so much of patience in the markets where you guys are not giving the money to. I'm liking that. Last day of being happy is equal to last day before marriage for guys. No, their story is good. They are in a living for more than 16 years. So the 17th year they are tying the knots to each other. Sir, is this entry valid? एक ही कैंडल बना है, इंड्यूसमेंट क्रिएट होने दो. सो सब सेलर्स को बिठाया है यहाँ पे. नाउ इज द गेम चेंजर. One retracement point, then we will look for it. As per the previous supply, that could be our target. Okay.
Cooking started by you. Awesome entry. I am waiting for a confirmation. Candle closing in 4 more minutes, guys. Sir, is any trade today? Sir, is any trade today? Yes, definitely, Rajiv. This is the point of action where we are looking to buy for, right? If the next candle take a retracement and continues the movement, even you can look for an execution here. Okay, but the only reason is the rejection point. One inducement, continuity. Sir, BTC any trades? No, not yet. Wait for it. So there is almost 25 seconds delay in the chart of yours. Why so? वही बोला था ना lag हो रहा है. I'll say you to refresh. Once the refreshment is set, then you can. Okay? There is a small lag happening. जैसे ही विक बिल्ड होगा
अगर जिन जिन को पेशेंस नहीं है वो एक छोटा सा ट्रेड देख सकते। SL point will be still the same. वर्षा ऐप वालों को बोलो कि वो लैग हो रही है यार, जितना वो वादा किया था उतना नहीं आया। जस्ट स्पीक टू देम वंस and shift the router to Airtel. London session 40 pips. Yes, that's right. Yes, guys, अभी रिफ्रेश कर लेना. It's back in the game. लैग नहीं होगा अभी से. It's taking retracement. अगर जिनको भी BTC में एक ट्रेड ऑफ एक्शन चाहिए, market tend to close small inducement. This will be your point A, this will be your point B, this will be your point C. Post the closure, post the inducement, point A, point B, point C, then the extension identification, not prior to that. वो दिन भी क्या दिन थे. गाइस रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, अभी लैग नहीं होगी. सर मिस्टेकनली पंच हो गया. सही डायरेक्शन में पंच हुआ है, टेंशन मत लो. मलबार ज्वेल्स वालों के गिरवा.
स्मिता मैम, आपका फर्स्ट राउंड था 29-25 पे, आपका सेकेंड राउंड था 29-39 पे, आपका थर्ड राउंड था 29-36 पे, फोर्थ राउंड भी देख लेना है। सर दिस इज नॉट फेयर। उनसे बात करो, तुम मेरे से क्या बात करो। फिर से शुरू हो गया तो। अगस्त्य चले जाओ यार अंटार्कटिका। टुडे आई वोंट बी पार्ट ऑफ योर फाइट एनीवेज। गोइंग ऑन फ्रॉम फ्राइडे। हाँ, चल रहा है। इन्फॉर्म इज योर ये जो डिले जो है, वो डिले कम हो गया। It should be somewhere around 4 to 5 seconds now. If you still facing the delay, play speed को बढ़ा के 2x कर लेना, 1 में होगा वो। Anyone has any doubts, please do ask. Still it's 25 to 30 seconds here. Play speed बढ़ा लेना। Beautiful guys. Lovely.
Can we take trade post closing of this candle, sir? That will be a FOMO running candle. If you are not entry, that's totally fine. Wait for an rejection. Sure, sir. We'll wait for the retrace. Yes. Anupam, just message me what is your deployment so that I will let you know where your entry should look like. Not here, somewhere in Telegram or WhatsApp. If it's a prop firm, you can say it over here only. If you're deploying with your real money, then let me know in WhatsApp or Telegram. Yogesh, hope you're not in the short grade anymore. Wait for the liquidity area and breaker point generation for new entries. वर्षा उस मैसेज को चेंज कर दो. And all the news and all the new members, welcome to the channel.
दिनेश, इसे बोलते हैं पागलपंती. Entered buy at 2938.5. Please guide me. Please. Entered buy at 2938.5. Please guide where should be my SL. Right? So 28.5 पे entry हुआ है. Right? Currently market is running at 20 pips. London session में your SL point is of 40 pips. So what you should do, if the market sustains above your SL range, till then your SL will be trailing in the SL range, right? अभी 10 pips पे चल रहा है, correct? So your first SL point will be at 2935.10 because 15 minutes retracement अभी तक हुई नहीं है. That's the reason I say don't look at 5 minutes and execute. So what you do, keep your SL currently at 2935. If the market sustains above 2941, then come at CTC. Else you have to give your SL because inducement अभी तक create नहीं हुआ है, ना retracement generate हुई है यहाँ पे. Okay, Rakesh? Always wait for 15 minutes retracement. Guys, क्लियर कट बोल रहा हूँ सबको, 15 मिनट्स में रिट्रेसमेंट हमेशा जब एंट्री पॉइंट होता है, कैपिटल इज गुड, एंटर डायरेक्टली एट द डिमांड रेंज. फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एंट्री ले सकते हो, राइट? इफ योर कैपिटल इज स्मॉल, लेट द इंड्यूसमेंट और द रिट्रेसमेंट क्रिएट. I am hoping that it can move directly up without creating any inducement or retracement. It doesn't work that way, Anupam. If you want to see why, so major liquidity will get allocated at this spot, right? Because retailers pressures is coming in now. It will come till here, it will generate a retracement and it will create a small inducement in this zone, then only it will move. Okay? Venkat, the level is towards the long, right? So the movement will be towards the long after the retracement and the inducement.
If the market tends to just create a retracement point, then from this range, market will tend to go only till 2950, which is 130 pips. If it creates an inducement, यहाँ पे आके रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके थोड़ा देर के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट की, उस इंड्यूसमेंट के साथ market will give you a entire movement of the supply, which is still 2963. But let the market create that area of inducement. So let the market create the area of inducement. And Rakesh, please follow the retracement points and the inducement points of 15 minutes. That will help you a lot to sustain. Sir, our book running 80 pips. When was the entry taken? He has four entries. Entry number one, entry number two, entry number three, and entry number four. From 2935, market had gone up till 2942. So hence he said 80 pips. Now the same trade of his is currently running with 20 pips. Sorry, 30 pips. Venkat, learn. That's totally fine. If you're missing out on trade, that's totally fine. Right? You're trading in demo, that's totally fine. Learn where exactly it's taking the rejections. Okay? I'm new here. Hi, good afternoon, Prashant. Seen your mathematical formula video, but to understand the supply and demand range, which video I should follow? The video is coming on Saturday. Post the mathematical formula video. You see the screening. Screening will make you understand how the market plays in the game. With that, there is one more video which says trade with supply and demand plus math. Okay, watch at that so you will understand how the supply and demand works in the mathematical direction. Major these three videos. Okay. Yet demo is also not yet demo is also not started, sir. Why, sir? You can start, sir. It's demo. If you want to learn, execute. Draw the level, execute. Right? I do know that the psychology won't work,
but at least you will understand how it is working. You can top up over there so it won't have any issues in regards to the losses, right? एक बार पैसा गया तो डेमो खत्म हो गया तो you can top up again. That's not an issue. Waiting for entries. Sir, waiting for entry से पहले you have to analyze, no, draw the levels and keep. Then you will get an entry. There you enter. Just the same way we draw this level. This was the demand. If you have drawn the same demand here, you could have taken an entry at this point, right? To understand. Okay. 2 more minutes on 15 minutes candle closing. Anupam, did you get the point? मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मूव होना है तो डायरेक्टली नहीं मूव होगा. इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, लेवल अलोकेट करेगा, उसके बाद ही मूव करेगा. Okay, sir. I thought you might have explained it in old live videos how to draw supply and demand. Okay, if you want live videos, you can watch it from Feb 17th. Feb 17th, Feb 18th for BTC, 20th and 21st. These are the dates of live videos. Okay. I thought you were just asking about the normal videos. If you want live videos, that is on Feb 17th and Feb 18th, right? From the reversal point till the execution point where the short reversal was generated. That was also explained in that. You can watch that. Okay. The wick hasn't been created yet. It could take a small wick generation and continuity. Hope you got the point, Prashant. Dates are starting with 17th, 18th, 19th, 20th. There is a full explanation of supply and demand in this zone. You can watch this out in the live markets, in the different categories. BTC, gold, Indian market, Ethereum. You'll find this many things in live.
Sir, why wick, not the body? Why wick, not the body? Matlab? Always remember, gold will create the wick, both the sides, if the market wants to give the moment. यहाँ पे wick है नहीं है तो it will create a wick here. Sure, sir, I do understand basic supply and demand, but this major technique is different, so I thought I should learn it. Definitely, Prashant. Thank you. You're welcome. Okay, Venkat. So always the wick is created, both the sides. If there is no wick, it will work same as 20th. What did market happen in daily? Market was fully bullish candle, but there was no wick in daily, right? ऊपर विक था बट नीचे विक नहीं थी. What did market do? It closed the entire range and created the body, and this was the closure. Okay, so always remember there is a wick created in any circumstances. अगर wick नहीं create हुआ है, then definitely it will come back to hunt that liquidity, and that you look in major 1 hour, 4 hours, and daily. Just for an example, what do you notice over here? Do we see any candles without wick? For us. Do we see any candle without wick? So always remember, gold, it tends to create a wick in each and every direction. Each and every direction मतलब अगर नॉर्थ में विक क्रिएट हुआ है, साउथ में विक क्रिएट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली द कैंडल विल मूव टुवर्ड्स द साउथ, क्रिएट द विक एंड कंटिन्यू द रैली. Sir, BTC 800 points running, MTSL points 450. So same with daily. What do you notice? Every candle has a wick. Without a wick, there is no movement. Right? So if you notice this area, जिसे भी इसमें ट्रेड कर रहे हो वहां पे विक होगा. Okay? Sometimes there will be a glitch, but all the candles will have a wick. Okay? किसने पूछा था? स्मिता मैम. Keep it here, ma'am. System trailing. Okay? Yet there is one retracement over here coming very soon in BTC in 1 hour time frame. In 30 minutes, there is one allocation which is already built. If you want point A, point B, point C,
first point of action till 96,054. From there, you will see one more retracement coming in and then continuity till 26,728. That is the level. 15 minutes is in that same direction. थैंक यू सर. पैसा उड़ने वाला था, बचा लिया. I was thinking to buy in FOMO at 2941.870. Oh my god. नेगेटिव जोन ऑफ सप्लाई में क्यों ट्रेड कर रहे हो तुम लोग? वेट करो. The market is what? Market is still in our zone. इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो. इंड्यूसमेंट बिल्ड होने के बाद ही, not prior to that. Sir, are you in Indian market? No. Today, illa. Today, I'm not there. How many trades done? First trade BTC, 1,000 points. Second trade gold running still, currently at 200 pips. Third trade gold, 180 pips, running still. Fourth trade gold, 10 pips, running still. BTC long? No. देखा ही नहीं तो लूंगा क्यों? सो आपका फोर्थ रेंज कहाँ पे था? यही. ड्रॉ हमने किया है तो एग्जीक्यूट हम ही करेंगे ना. दिनेश, क्या हुआ? नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है क्या? Why does market नेट ऑफ है? ओके. मोबाइल से कनेक्ट किया है. ओके, ठीक है. Why does market follow your footsteps?
Market doesn't follow my footsteps, we follow market's footsteps. उल्टा बोल दिया आपने. All the new people who have subscribed to the channel, thank you. Keep learning and keep growing. Don't trade in hurry. No FOMO trades. Don't lose the capital. And जो देख रहे हैं and subscribe नहीं किया है, if you're liking the content, the learning perspective of the market, please do hit a like, share, and subscribe. ये 2 मिनट होने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, देन समझ लेना इंड्यूसमेंट इज स्टार्टेड टू क्रिएट एंड कभी भी यहाँ से मूवमेंट आना शुरू हो सकती है. Looking to add one more round? No, wait. Patience-full. Have some patience. एक कैंडल क्लोज तो करने दो. अगर ग्रीन क्लोज करके रेड आता है ना तब. Just like going up, rejection, continuity. Rejection, continuity. Okay. Done. One, two, three. रॉकेट देखा है?
हाँ देखा हो। लॉन्च देखा है मैंने, लॉन्च। इसरो। मैं भी अभी लॉन्च होगी गोल्ड में। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट राउंड तो सुबह ही लॉन्च हो गया था ना, 200 के। इट विल कंटिन्यू अगेन, यस इट विल कंटिन्यू। जैसे हमें चाहिए था अभी, इट विल मूव टिल 2950। सेकेंड लॉन्च, सेकेंड लॉन्च से लॉन्च पैड तक। सर आपने वरुण को एक्सप्लेन कर रहे थे रिजेक्शन में एंट्री लेना, मैं भी ले ली। ओके अरुंधति मैम। नो चीटिंग। राकेश 20 पिप्स चल रहा है आपका ट्रेड, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में 40 पिप्स जब होगा, तब जाके आपका एसएल जो है वो सिस्टम पे सीटीसी प्लस 10 पिप्स में आएगी। सॉरी, हाँ 10 पिप्स में आएगी। ओके। गैस फिल हो रही है। ये किसको बोल रहा है नो चीटिंग? आपको ही बोल रहा हूँ। Yes, sir, 20 pips running. Because your SL is of 40 pips, let the 40 pips sustain, then CTC plus 10 pips. एक बहुत बड़ा कैंडल बनने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको।
लाइव लॉन्च। हम भी देख रहे हैं। Who feared in that rocket? No one yet. अभी भी फीलिंग चल रही है। Guys, hit the like button. कहाँ तक फीलिंग चलेगी? 29:44 तक फीलिंग चलेगी। क्रैश नहीं होना चाहिए सर। क्रैश क्यों होगा? रॉकेट कभी स्टैंड पे ही क्रैश होते हुए देखा है इंडिया में? नहीं ना। तो दूसरे कंट्रीज की बात मत करो, इंडिया की बात करो। बट यहाँ पे क्रैश होता है तो भी ग्रीन में ही क्रैश होगा। राजीव, आर यू इन द ट्रेड लॉन्ग की तरफ? Why? It's ready to execute now. Anupam, you are in the trade. Okay, no worries. If you have missed it, you will get one more opportunity.
That time I was working. No worries, sir. सर आज कोई मीटिंग मंडे है यार. मंडे उसको उसके हिसाब से चलने दो. Currently 6 more points pending. Yes. Lovely. सर आपका कोई कोर्स है क्या? नो, वी डोंट हैव कोर्स. कोर्स नहीं है सर.
Sir purchased gold 0.02 lots at 2941.405. 2941.405. Okay. Why did you purchase, sir? Reason? You purchased here. Reason? Why are you thinking like a retailer? पुल बैक कैंडल के ऊपर ब्रेक होने के बाद एग्जीक्यूट करोगे, हमेशा फर्स्ट आपका एसएल लेगा. Okay. Going forward, don't repeat the same mistake. Execute the trades only at the inducement level, reversal areas, and at the retracement points. I thought it will go up like rocket. Venkat, it doesn't work that way. They are just having fun around. Follow the rules, please. See, a person who has sat over here in the trade, he is safe. A person who has sat over here is safe. Right? A person who is sitting after a pullback, is he safe? No. First, he will get out of the trade, then the market will tend to move in the direction. Okay? So always be in the direction. Enter the trade in demo account 2940. Why? Where are the rules? Guys, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ. Okay?
Just a small example. Where are you guys sitting? You're sitting at the point of end of first supply range, you know? That is wrong. It will tend to hunt. It will hunt you guys down. You have to understand what is happening in the market. Retailers are always following a patterns. हर एक टाइम वो एक पैटर्न फॉलो करके बैठे रहते हैं. डालो. Okay. You're noticing something. It will hunt them down. No? You're not sitting from here. You're sitting here. Definitely it will hunt you down.
Always Rajiv, Venkat, make sure that you guys sit in the retracement, okay, going forward. डेमो में ही सही बट रिट्रेसमेंट पॉइंट में बैठना. नेक्स्ट एमएन पे कितने बजे? 1:30. ओके. श्योर. ओके. Right, this was our demand range completion, right? This is the range where you will see a retracement. This is a retracement. You can see it over here, not here. Next, again, wherever you find the next retracement, on the next candle, you can enter. Okay? Always remember that. Don't enter in running. If your day is good, definitely it will give you money. If your day is bad, it will hunt you down. Okay? But when you follow the rules, when you wait patiently, if your day is good, definitely it will give you good returns. If your day is bad, it will not hunt you down because 20 pips in the Asian session, 40 pips in the London session. And when you are in running, where will you keep your 40 pips? Just for an example, let's take in the candle. You have entered over here post the retracement, right? Let's calculate how long from here to here. It's somewhere around nice 100 pips, I guess so. Yeah, 110 pips. What will you do? At that stage? So always remember, protect your capital.
Rakesh, post the market sustains, right? Then you will get into the range. Okay. You will move your SL once it sustains at 40 pips. Back to 80 pips. Twenty-nine 39.5. 10 pips. Yes. Sir, can we wait till 24:50?
ये जो वॉच लिस्ट में दिख रहा है ना, ये 10 पॉइंट जाने तक आराम से रह सकते हो। 6 में है, वो 10 पॉइंट जाने तक आराम से बैठ सकते हो। ठीक है। What is watch list didn't get? So just for an example, if you notice over here, this is the performance, right? So the current performance of gold, what is it saying? It's saying plus 6.25, right? Always remember this will go to 10 points. Okay. If the market tend to close above 3 points, this will close till 10. If the market tend to close negative 3 points, it will close negative 10. Oh, okay. Anyone has any doubts, please do ask. And make sure don't trade in FOMO, wait patiently, take the trades, execute the trades only at the retracement points so that you don't lose the capital. Follow the rules, understand why the market is moving. Before getting greed, know that execution point is very much important to have that greed as well. Else, it will be called as gambling, which we don't entertain here. Till then, everyone take care. मिलते हैं in the evening session. तब तक के लिए नितेश signing off. Take care. Bye bye.
Rakesh, now you can move your SL to 2939.650. Great. Your MTSL will be at 2941.870. So now movement has started so that I can close the stream peacefully. Okay? Great. 6x running. थोड़े लोगों का 13x चल रहा है, थोड़े लोगों का 6x चल रहा है, थोड़े लोगों का 8x चल रहा है. Everyone keep it up. Did a great job. Had a patience and executed. Beautiful guys. सबका MTSL लेके आके 2941.870 पे रख लेना so that you guys closes in a good green. Keep trailing, be in a MTSL direction and hold on. Okay. So now literally I am taking off. Nitesh, bye bye. Take care. मिलते हैं इवनिंग सेशन में.